Hello everyone, my name is Dr. Aditi Bhasin and today I am here to talk about gout, excessive uric acid deposition या फिर गठिया या फिर कुछ डिपोजिशंस की वजह से जो हमारे जोड़ों में दर्द होती है वो किस कारण से होती है. What is the best diet that you should follow to reverse it? What are the best homeopathic medicines that are most effective in this situation? And what are the signs and symptoms? आप कैसे पहचानेंगे कि आपको ये कंडीशन है? What are the investigations that should be performed to reverse and diagnose this condition? सो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम कहते हैं गाउट जो है इज एक्सेसिव यूरिक एसिड डेपोजिशन. सो यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट देयर आर सम मेटाबॉलिज्म दैट हैपन्स इन द बॉडी जिसके एंड प्रोडक्ट में यूरिक एसिड रिलीज होता है और ये यूरिक एसिड जो है हमारे जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है. इन द साइनोवियल फ्लूइड इट गेट्स डिपॉजिटेड एंड फिर हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है. सो सिम्टम्स क्या होंगे इसके? सपोज एट वन नाइट यू आर स्लीपिंग वेरी calm and quiet, that there is no joint pain whatsoever. What in the morning when you get up you see that there is tremendous swelling in your toe, there is redness, inflammation, swelling, and even the bed sheet you can't bear. It is so painful that even you can't bear the touch of your own hand. So if that happens, it resolves on its own. Whether you take some home medicines, you do something at your home, it resolves on its own. This is the in the pathology of the condition, that after 10 to 15 days it resolves. You feel that everything is fine, it is just an episode and all is well now. But then what happens is this, till here it is known as acute condition. Now what happens is this keeps on repeating itself once in a month, twice in a month. After few days it gets well and again it starts. So when it keeps on occurring, what happens is it is known as chronic condition. Now you have chronic gout. This means that there are some changes in the anatomical structure of your joint. Joint में आपकी कुछ destruction होनी start हो गई है, कुछ crystals ज़्यादा form होने start हो गए हैं and your condition is getting more chronic, more severe. ये कौन कौन से जोड़ों में देखा जा सकता है? Almost it covers most of the joints of the body, but हमारा great toe, इसकी पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूंगी, वो हमारे फिंगर्स, ईयर लोब्स के पास और हमारे एंकल्स, ये कुछ कॉमन एरियाज हैं जहाँ पर हमें गाउट की डिपोजिशन दिखती है. इसमें गठिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं इसी यूरिक एसिड की. तो ये नोड्यूल्स फॉर्म होने के बाद इनमें बहुत दर्द होती है. अब आप ऐसी क्या डाइट खा रहे हैं जो आपकी कंडीशन को वर्स बनाए? सो फर्स्ट इज यू हैव टू स्टॉप टेकिंग अल्कोहल. इन अल्कोहल ऑल्सो आई वुड सजेस्ट बियर. सबसे ज़्यादा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को जनरेट करके उसके एंड प्रोडक्ट को रिलीज करती है, तो बियर इज समथिंग दैट यू नीड टू स्टॉप. Now in non-veg, I would like to say that or the organ meats you need to stop. For example, you need to stop liver, कलेजी जो लोग खाते हैं. Then comes red meat, lamb, pork. Also, I want to add that you can have chicken breast because it is a part of a lean protein. In vegetarians, I would like to add that some people think pulses, दालें, राजमा, छोले ये सब खाना नहीं चाहिए. ये एक मिथ है. ऐसा कुछ नहीं है कि आप गठिया में ये नहीं खा सकते, थोड़ा लिमिट करके खाएंगे. But because vegetarians have a very very limited amount of proteins, we cannot cut short on the already available sources in vegetarians. So you can have everything, but in a little amount you can have them. There is no need to stop pulses. Okay, pulses नहीं रोकनी है. फिर भी कुछ सब्जियां जो आपको कम कर देनी चाहिए, उनमें दो सब्जियों का बस नाम लूंगी. एक है पालक, स्पिनच, दूसरा है एस्पैरागस, शतावरी के नाम से भी उसे जानते हैं. So इसके अलावा vegetarians can have everything. Second is you have to stop the alcohol. The third thing is low fat dairy. You cannot afford to have malai in the milk. Get the milk skimmed. Skimmed milk से आप छाछ बनाएं या कुछ भी बनाएं. Skimmed milk अगर आप ले रहे हैं तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं. So मैंने कुछ do's and don'ts बताए हैं आपकी डाइट में, जो अपनी already existing डाइट में you can regulate these things and make it a best diet for your own self. Also I would like to add that you should add as many fruits, as many vegetables to your diet and also add complex carbohydrates. So मैदा को अवॉइड करेंगे और रागी, बाजरा की रोटी, हमारी नॉर्मल जो आटा है उसके साथ मिक्स करेंगे और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करेंगे. These are some things that I want you to change in your diet.
मैंने आपको साइन एंड सिम्टम्स बता दिए. अब बात करते हैं इसका टेस्ट कैसे कराते हैं. सो देयर आर टू काइंड ऑफ टेस्ट दैट आर अवेलेबल. वन इज एस्पिरेशन ऑफ द मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स. टू मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम जॉइंट में से कुछ फ्लूइड को निकालते हैं एंड देन वी टेस्टेड एंड मोनोसोडियम यूरेट अगर आता है उसके अंदर तो हम उसको गाउट का कंफर्मेटरी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट मानते हैं. बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स एंड मोस्ट ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स विल नॉट आस्क यू टू परफॉर्म दिस टेस्ट. इंस्टेड देयर क्लिनिकल नॉलेज एंड देयर क्लिनिकल ओरिएंटेशन एंड देयर experience will diagnose your condition with your existing symptoms. The less known and most common test is जब हम blood test करवाते हैं और उसके अंदर uric acid को देखते हैं तो अगर वो बढ़ा हुआ आ रहा है तो it is commonly addressed that yes, the patient can be in the patient can be in gout. However, it is not a confirmatory test, but it is the most convenient test. So most commonly it is performed that way. Now, what are the best medicines in homeopathy that you can have? So homeopathy is a science of specialization, that is individualization. I do not recommend you to take any combination of medicines on your own. The most common medicines that are very effective in the conditions can be benzoic acid, colchicum, rustox, lithium carb, lidimpal, urticaria urins. Now all these medicines have different powers, different potencies. There are tinctures 30, 200 and higher potencies as well. It depends on your case that which power or which drug that you require. Also, and what repetition you require those drugs. So you need to consult your nearest homeopathic physicians. This condition can be very well managed if you have a good doctor, and if you want to pursue homeopathy, you can have best medicines in homeopathy, but it is very important that as per your case, the power of the drug, the repetition of the drug should be managed accordingly, and only in that way you will get the most benefits out of it. So I hope this video is knowledgeable for you and has explored you more outcomes as far as diet investigations of gout is required. So I would like you to subscribe my channel for more health updates. See you soon in the next health update. Thank you very much for watching till here. Namaskar.